Now, what is basically center of gravity? Now, the center of gravity of an object, sometimes called the center of mass, is the point through which the weight of the object है. ये एक ऐसा point है on the object जहाँ पे उस पूरी body का weight act करता है. जैसे कि ये एक object है. अब इस पूरे object का जो weight है, वो कहाँ पे act करेगा? इधर. यहाँ से weight होगा. इस triangle का center of gravity ये है जहाँ पे weight act करेगा. इस पैरेललोग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है जहाँ पे वेट एक्ट करेगा एंड सेम इज द केस विद दिस rhombus एज वेल जहाँ पे उसका वेट एक्ट कर रहा है. So it is the center of gravity which is the center of mass. Center of gravity and center of mass are the base same thing, COG and COM. For a symmetrical object of a uniform density such as a symmetrical cardboard shape, the center of gravity is located at the point of symmetry. जहाँ पे भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे वहां पे सारी लाइन जो होंगी ज्यादातर मिडिल में ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेटेड होगा. दिस इज ओनली फॉर सिमेट्रिकल शेप्स. When an object is suspended from the point, the object will always settle. अब let's say कोई symmetrical object नहीं है, जैसे कि ये बहुत ही irregular shape है. अब आपको क्या पता है कि इसका center of gravity कहाँ पे है? आप क्या करेंगे? You would hang this at random points. पहले आप यहाँ से hang करेंगे और एक plumb line यहाँ पे hang करेंगे. You would release it और फिर आप देखिए plumb line कहाँ पे hang हो रही है. यहाँ पे एक line draw करेंगे. Then you will hang the object again. अब यहाँ से hang करेंगे. Again plumb line suspend करेंगे और एक लाइन यहाँ बना देंगे. Then you will hang the paper or the irregular object at this point. यहाँ पे भी वो plumb line extend करेंगे, ठीक है. और एक ये जहाँ पे तीनों लाइन coincide करेंगी, that would be your center of mass or the center of gravity. अब ये है for unsymmetrical object. वो तो symmetrical के लिए था कि हाँ ठीक है सारे corners को join कर दे और बीच में आपस हो गए, जैसे square हो गया, triangle हो गया, that is pretty much easy. But when an object जो कि irregular object है is suspended from a point, the object will always settle so that its center of gravity comes to rest below the pivoting point. This can be used to find the center of gravity of an irregular shape, और इसको हम plumb line experiment भी कहते हैं. That can be asked and has been asked in your O-level exam. The irregular shape is suspended from a pivot and allowed to settle. A plumb line lead weight is then held next to the pivot and used to draw the vertical from the pivot. The center of gravity must be somewhere on the line. अब आपने इस ऑब्जेक्ट को हैंग करना है. बेसिकली यहाँ पे मैं हिला तो नहीं सकता ऑब्जेक्ट. आई शो यू वीडियो, बट फर्स्ट यू विल अटैच द ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर. उधर से एक लाइन लटका देंगे, ठीक है, और वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. देन यहाँ से हैंग करेंगे, अगेन लाइन लटकाएंगे. समझे? अभी ये चीज यहाँ पे लग गई है, ठीक है, और फिर लाइन लटकाएंगे एक और. तीन चार पॉइंट्स पे कर लें जहाँ पे वो लाइन सारी मीट करेंगे. दैट वुड बी योर center of mass. And you keep repeating this process. The process is then repeated, suspending the shape from two different points. And the center of gravity is located at the point where all three lines cross and intersect.